Okay, so we are revising questions on past papers from the chapter gas exchange. And right now you can see a question in front of you in which different parts of the gas exchange system have been labeled. And you have to complete the table 1.1. One row has been done for you. I am just going to hold the questions like this and very quickly, we'll do it together in fact. Okay, we'll do it together very quickly. You tell me the letters for each of the function and the name of that part. Yes. Figure 1.1 shows the meaning and gas exchange the functions of each part of the system. The function that makes the sound is the larynx. Miss, this is That's also already done. Acha, because okay, never mind. The bone that provides protection for the lungs is the What's the alphabet? No. The bone that provides protection for the lungs. What is that bone, or what is that bony structure that covers your lungs? It protects your vital organs, the lungs. Look at the alphabet in the diagram. What looks to you that it will cover the lungs and protect it? Yes, look at the alphabet. Miss B. B. Do you think that B is covering the lungs? Just have a look. It's not covering the lungs at all. And first of all, do you think cover the lung ko to chodo? Do you think B is a bony structure? No. Is it a bony structure? First of all, tell me the name of the part B. The C-shaped cartilage. It's the C-shaped cartilage, but C-shaped cartilage is found in what structure? What is the name of this structure? What is the name of this pipe? The larynx. Larynx. Larynx is A. You can see at the top. ये जो आपको नजर आ रहा है trachea ना? How can you forget trachea? Trachea is the main pipe through which the air passes, right? Yeah. Windpipe भी हम उसको कह सकते हैं, trachea भी कह सकते हैं, right? So how can you think that something which is trachea, जो कि bone से तो बना ही नहीं है, do you think that your trachea is made up of a bone? अगर वो bone से बना होता तो when we are breathing in and out, trachea आपका stretch करता है, तो bony things can't stretch. Trachea is made up of the tissue which is cartilage, and the cartilage gives it mechanical strength, and besides that the trachea is made up of stretchable structures like muscle tissue and elastic tissue that help it stretch outwards and inwards so that we can breathe in and out, right? Think about कोई ऐसी चीज सोचो इसी डायग्राम के अंदर. Think about that label जो आपको ये show कर रही है कि it is something. It should be a bone, number one, and it should cover the lungs and protect them. What is that structure? Bone ही होना चाहिए. A is not bone. B is not bone. M is not bone. C is not bone. D is not bone. What is E? Does E look like a bone to you? Yeah, E and K. K? K is not a bone. Acha. K looks like a muscle. Muscle ही ऐसे lines वाला होता है, stripy होता है, right? Yes, that's the intercostal muscle. तो अगर ये intercostal muscle है, हम कहते हैं ना intercostal muscle, the muscle found between two ribs. तो ये जो आपको muscle नजर आ रहा है K, ये दो ribs के बीच में है. तो K जो है ना, वो एक छोटी सी हड्डी से शुरू हो रहा है और दूसरी हड्डी पे खत्म हो रहा है. फिर दोबारा से K एक छोटी सी हड्डी पे शुरू हो रहा है, दूसरी हड्डी पे खत्म हो रहा है. This हड्डी or this bone is E, and this is the rib. It's your rib. लेकिन ये असल में इस rib को किसी ने काटा हुआ है. Somebody has cut this rib, cut open this rib so that we can see the lungs. Normally तो ये पूरी rib cage ने lung को cover किया हुआ होता है, isn't it? Oh yeah, miss, rib cage. Rib cage. So then what will be your answer? Yes, the whole, now I am actually zooming out, and tell me what's the answer for bone that provides protection for the lungs? The letter is? Mrs. I can't find the rib cage, जैसे वो थोड़ा circular सा होता है ना. देखो rib cage टूटा हुआ है ना,
रिब केज को खोल के तोड़ के दिखाया है, तो रिब केज का जो बचा कुचा पोर्शन है ना, दैट इज ई. अच्छा वेट. No. Miss, can you zoom out of the picture? Oh yeah, Miss, it is वेट. E. It is E. समझ गई. लुक हियर. नाउ लुक. दिस इज दिस वन. Hmm. दिस ऑल दीज आर बोन्स. ये भी बोन है, ये भी बोन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. वी कॉल दीज मसल्स, मैं मसल को ब्लू में कलर कर रही हूँ, वी कॉल देम इंटर. What? इंटर का मतलब मतलब इंटर मीन्स इन बिटवीन है ना, इंटर स्कूल कंपटीशन हम कहते हैं. इंटर कॉस्टल मसल्स. और ये कॉस्टम external का मतलब, हाँ एक सेकंड पहले सुनो बात. इफ यू लिसन टू द कॉन्सेप्ट ना, यू विल नेवर फॉरगेट. कॉस्टम इन बायोलॉजी मींस रिब. सो मसल्स फाउंड इन बिटवीन रिब्स. समझ आए? अगर आप जिस वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट मिल रहा था ना, अगर आपने ये गौर से उस वक्त सुना होता ना, तो आपको ये कभी भी नहीं बोलता. यू डोंट हैव टू रेक्टिफाई. एक चीज आपके दिमाग में थी, आपने बोला अरे ये तो इंटरकॉस्टल मसल्स है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स? मसल्स दैट आर फाउंड इन बिटवीन द रिब्स. अगर हम कह रहे हैं मसल्स दैट आर फाउंड इन बिटवीन द रिब्स, तो जो ये मसल है, राइट, ये जो मसल है, ये जो मसल है, ये रिब्स के बीच में है ना. तो जो ये बीच वाला पार्ट है, इसी को ही रिब, यही रिब है. अच्छा, अब यू कांट सी द रिब केज बिकॉज द रिब केज वाज लाइक दिस, ऐसे था. बट नाउ द रिब केज हैज बीन ब्रोकन बिकॉज वो ब्रेक करेंगे, हटाएंगे रिब्स, तो ही तो आपको लंग्स नजर आएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये रहे रिब्स. अब इमेजिन करो किसी ने रिब को काटा है, यहाँ से काट लिया, सब काट लिया, तो क्या बचेगा? सिर्फ ओनली दिस विल बी लेफ्ट. जस्ट जस्ट अ मिनट. ओनली दिस विल बी लेफ्ट. ये जो मैंने रेड से कलर किया है ना, दिस वन, Yeah. मैं उसको व्हाइट से कर रही हूँ. आई एम एक्चुअली अगेन कलरिंग रेड इनटू व्हाइट. दीज आर द बोन्स, दीज आर द कॉस्टम. ठीक है. अच्छा, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. Now tell me, what will be the answer for this? Which letter? The bone that provides protection to the lungs. Which letter? E. What is the name? Um, in a rib cage. Ribs. Ribs. Yeah. बस rib. हाँ, rib cage जो भी. अच्छा, third. What's the third question? Tell me the alphabet. Airway that allows passage of air only into the right lung. Hmm. A. Passage of air into the right lung. क्वेश्चन गौर से सुनो. आप ए पे बार बार क्यों आ रही हो? एक सेकंड आप वो अनीजा, मुझे समझ नहीं आ रहा. ए तो ऑलरेडी वी एस्टैब्लिश्ड एंड द एग्जामिनर हैज सेड, एग्जामिनर हैज डन इट फॉर अस, एंड ही इज सेइंग What? कि ए लैरिंग्स है. ठीक है, ए इज योर साउंड बॉक्स. जस्ट फॉरगेट अबाउट ए. आप Okay. इस डायग्राम को देखो, डायग्राम में देखो कौन सा वो ट्यूब है, ऐसा कौन सा ट्यूब है जो कि आपको नजर आ रहा है, जो दैट विल ब्रिंग एयर ओनली इनटू द राइट लंग. एंड आल्सो व्हाटएवर इज अपीयरिंग ऑन द राइट साइड टू यू is actually the left side, and whatever is appearing on the left side to you is your right side. I hope you're understanding what I'm saying. Also, basically, जो AB वाली side है, this is my left side, and ये जो Yes. J वाली side है, that's my right side. हाँ, तो अगर if let's assume that the MKJH side is your right side, ठीक है, तो उसमें गौर से देखो, what is that pipe, what is that tube that is bringing air to the right lung only? उस The ट्यूब को देखो. Look at that tube, find that tube जो सिर्फ और the सिर्फ bronchi, the air. bronchi. नहीं, I did not ask you the name. Tell me the name of the alphabet. वो कौन सा अल्फाबेट है इस डायग्राम में, जो कि आपको नजर आ रहा है कि वो अल्फाबेट कहाँ पॉइंट कर रहा है? It's pointing to a tube which is bringing air only to the right lung. What's that alphabet? J. J. ठीक है ना, J है. अच्छा, आपने J लिख लिया. What's the name of the structure? Right bronchus or left bronchus? Left. Why left? अभी अभी तो हमने कहा ये हमारा राइट साइड है. अच्छा, yeah, miss, I forgot whatever side it is, उसी का ही bronchus होगा. हाँ, ये सेम टू सेम चीज होगी कि when you are looking at the diagram of the heart also, your right side will be the left side and your left side will be the right side, because you know what, uh,
What device are you working on? लैपटॉप, iPad, क्या चीज? Laptop. लैपटॉप. हाँ, लैपटॉप को तो उठा के आप अपने चेस्ट पे नहीं रख सकते, लेकिन अगर ये मोबाइल होता या iPad होता तो you just pick up this and put it, हाँ, and put it on your chest. So if you Yeah. now put it on your chest तो वो sides reverse हो जाएंगे. समझ Yeah. आए? Yeah. अच्छा, now let's do the third one. Now look at this diagram very carefully. अब A नहीं बोलना आंसर, थर्ड वाले को देखो. Sorry, थर्ड नहीं, फोर्थ. Airway that allows passage of air into both lungs. Into both lungs. B. B. What is the name of B? Yeah. Trachea. Air. अच्छा, the structure that contracts to increase the volume of thorax. Volume of thorax. एक structure है जो जब वो contract करता है तो thoracic cavity volume increases. G. G. G is the intercostal muscle. No, I don't think so. G is the intercostal muscle. It has got nothing to do with the volume of this. It is actually, The it thorax. will bring the, नहीं, जो G है ना वो intercostal muscles है. Intercostal muscles volume of thorax को नहीं बढ़ाते. There is another muscle. Look at this. Look at this diagram very, very carefully. Think about that huge big muscle that when it contracts, it flattens out. याद करो. मैंने inhalation, Oh, the have you diaphragm. revised? Diaphragm. F. Diaphragm. Diaphragm, right? Acha, now you tell me. Let's revise inhalation and exhalation. When I'm inhaling, Yeah. when I'm inhaling, deep inhale right now, deep breathe, put air inside your chest right now, and you tell me, should the volume of your thoracic cavity increase or decrease when you're breathing in? Breathe Increase. करके आप feel करो. It should increase. ठीक है? If it's increasing, then this means the diaphragm should contract. Contract क्योंकि आप और ज्यादा air अंदर ले. और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब यह है कि डायफ्राम विल नो लॉन्गर अपीयर डोम शेप एज इट इज इन दिस डायग्राम. इट विल स्ट्रेटन आउट, सीधा हो जाएगा, डोम शेप नहीं होगा. तो जब सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द thoracic cavity will increase in volume just like this. Look, this is your diaphragm. Right now it's dome shape. When you want to inhale, the diaphragm will become like this. अब जब खिंच जाएगा ऐसे, ठीक है, the fibers are contracting. I say that the fibers are contracting and the diaphragm has flattened. अच्छा, अब जब flatten हो गया diaphragm, तो ये सारी space तो खाली हो गई ना? ठीक है? So hence we say that, now you now tell me this statement. What is going to happen to increase the volume of the thoracic cavity during inhalation? बताओ. Okay, to increase the volume of the thoracic cavity during inhalation, the diaphragm will become flat like a sheet so that more air can be taken in during inhalation. Correct. Acha. And of course we say that the diaphragm will contract. ठीक है? And what will happen to the intercostal muscles during inhalation? External भी है हमारे पास, internal भी है. So during inhalation, which ones will contract and which ones will relax? The external intercostal muscles will contract and the internal intercostal muscles will relax during Okay. Inhalation. अच्छा. And during inhalation एक और चीज बताओ कि will the, क्या कहते हैं उसको? What will happen during inhalation? Volume तो बढ़ जाएगा. What will happen to the pressure of the thoracic cavity during inhalation? अगर volume बढ़ेगा तो pressure को क्या हो जाएगा? बिल्कुल opposite हो जाएगा. What will happen to the pressure? कम हो जाएगा. ठीक है? Exhalation में बताओ, अब exhalation में क्या होगा? Exhalation में the external intercostal muscles will relax and the internal intercostal muscles will contract. फिर the volume will decrease, the pressure will increase, and the diaphragm will return back to its normal shape. Return back का मतलब contract या relax?
Oh, the diaphragm will relax. Okay, correct. Sorry. Now this question, abhi bhi baki hai. A muscle, sorry, I'm zooming out. Pick up the letter which shows you a muscle that contracts to lower the rib cage. अच्छा, एक बात याद रखना, जब मैंने आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन कराया था तो आई टोल्ड यू जस्ट पुट बोथ योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट एंड इनहेल. What happens to your ribs when you're inhaling? Are they moving upwards and outwards or downwards and inwards when you're inhaling? Upwards and Do it and outwards. tell me. Upwards and Upwards outwards. and outwards. ठीक है. अब exhale करो. Exhale में क्या हो जाएगा? Inwards and downwards. Inwards and downwards. तो जब upwards and outwards हो रहा होता है तो which muscle is contracting? The external intercostal. And the internal is relaxing. ठीक है. जब downwards and inwards करना होता है तो कौन सा muscle contract कर रहा होता है? Internal and external relax. Internal. अच्छा, keeping all this in mind, tell me which is the muscle that contracts to lower the rib cage? Hmm. Two muscles have been labeled over here, K and G. Out of K and G, one of them is external and the other is internal. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मसल है which when it contracts the rib cage is going downwards. What is that muscle? The external. सबसे पहले External. तो आप मुझे बता, इंटरनल हुआ ना, तो इनमें से इंटरनल कौन सा है? What option did you give me? G and K and G. Which is internal and which is external? External बाहर की तरफ है, internal अंदर की तरफ है, तो which is बाहर की तरफ? G or K? G. G is external and K लेकिन is internal. लेकिन आपने ये नहीं कहा था ये जो white spaces these are also intercostal muscles. White spaces are not intercostal muscles. White spaces are ribs. दोबारा से हम उस diagram पे जाते हैं. Look, I'm again coloring and zooming in to show you. Wait. I'm using blue color, right? Rib, ribs, ribs. Okay, समझ आ गया. I get it. Sorry. ठीक है. Now the muscle. Intercostal या दो रिब्स के बीच में, इंटर मतलब बीच में, कहते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, राइट? Yes. इंटरसेशंस. ठीक है. तो कॉस्टम मींस रिब, the muscle that is found in between the two ribs. Now the muscle that is found in between the two ribs can be on the outside and it can be on the inside. Inside वाला K है, तो जो when your ribs are moving downwards, which muscle is contracting when your ribs are moving downwards? The external. करके देखो. Inhale करो and put both your hands on your chest. Inhale. Your ribs are Oh, moving upwards. downwards. Oh, sorry. तो downwards के लिए internal. Internal होगा, तो अगर downward के लिए internal होगा, तो then which letter should you pick for 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sixth वाले blank के लिए which letter will you pick? K. Internal K. Now you got it. So Yeah. K. And then the name is what? Internal intercostal muscles. Now pick up a letter which shows you that what is the site of gaseous exchange, and that is the most easiest question. Yes. I'm just going to zoom in a little into the diagram. Site of gaseous exchange. In order for the oxygen and the carbon dioxide to move in and out, you have to have really tiny structures, one cell thick. Membrane बहुत पतली होनी चाहिए. कहाँ होती है gas exchange? I don't think you should even, take a second to answer this. Bronchioles. Not bronchioles, alveoli. Yeah, sorry. Alveoli. Alveoli, air sacs. So M. which M? Acha. Now let's have a look. So are we right? Look at this.
Yeah. ठीक है. अच्छा, let's now go back to the question. The gas exchange system contains cartilage. Describe the function of cartilage in the gas exchange system. अच्छा, before we do these questions, I was just thinking, did you get a chance to revise this chapter? Because अगर revise नहीं किया ना, तो फिर, I don't think there is a use to do the No, past papers. no, You I didn't get haven't. the chance. हाँ, रिवाइज तो करना चाहिए. अब हम तो आज तो कर ही रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम ना, डू सेलेक्ट अ पोर्शन योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, खुद से सोचो कि अच्छा, अब मुझे जो है ना वो रेस्पिरेशन करना है. लेट्स से नेक्स्ट टाइम के लिए हम अभी से डिसाइड कर लेते हैं फॉर वेडनेसडे मॉर्निंग दैट यू जस्ट रिवाइज एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ये पार्ट, ताकि फिर हम जब रिवाइज करें तो हमारा पक्का हो जाए वो. ठीक है. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक दैट कुड बी? अभी मैंने a while back ago I just told you a little bit about कि cartilage होता है ट्रेकिया में, उसका ये फंक्शन होता है. तो what do you think could be the possible function of cartilage in the gas exchange system? Miss, 1 second. I'm just writing about what I need to know for Wednesday. Describe the function of the cartilage in the gas exchange system. Miss, the cartilage is the C-shaped structure, right? Yes. C-shaped structure, not hard as bone and not soft as muscle. And the hint is that your trachea, which is your main pipe through which you take in air into your respiratory system, should have cartilage to prevent what? What is this cartilage giving to the trachea? Is it giving it what? Think about it. Miss, so basically the cartilage is supporting the trachea and it's basically helping it to stay there. Mechanical strength. Mechanical अपने strength. कान को हाथ लगाओ, कान को. टच योर ईयरलोब, जो उसका टफ वाला पार्ट है उसको टच करो. ठीक है. इट्स नॉट सॉफ्ट एज स्किन एंड इट्स नॉट हार्ड एज बोन. फीलिंग आई उसकी? ठीक है. आई फीलिंग नहीं, नहीं आई. अपने कान को हाथ लगाओ अपने. दैट टफ. ठीक है. एक तो आपका कान का ईयरलोब होता है जहां पे हम ज्वेलरी पहनते हैं. दैट्स सो सॉफ्ट. टच दैट. दैट्स सो सॉफ्ट, राइट? एंड देन द ईयरलोब इज अ बिट टफ. सो सी, जहाँ पे सॉफ्ट है, तो जहाँ पे सॉफ्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो वहां पे द फंक्शन इज डिफरेंट. नाउ योर ईयरलोब्स हैव टू बी मेड अप ऑफ दिस कार्टिलेज so as to protect them from injuries and also to give it mechanical strength, क्योंकि यही वो ईयरलोब्स हैं जिनको साउंड वेव्स कलेक्ट करके और आपके ईयर में डालनी है, राइट? तो cartilage gives mechanical strength. Why do we need a mechanical strength in a trachea? Just see, इधर देखो. For example, ये रहा आपका ट्रेकिया. ठीक है. I'll just draw something over here. This is your trachea. Imagine करो अगर आपका ये ट्रेकिया इतना सॉफ्ट होता जितना कि आपका ईयर लोब है. और इसकी जॉब क्या है? इट हैज टू ब्रिंग एयर ऑल द टाइम. कोई ऐसा वक्त नहीं है जब वी स्टॉप ब्रीदिंग, इजंट इट? वी आर ब्रीदिंग सिंस द डे वी आर बोर्न टिल द डे वी विल डाई. एंड दिस इज अ पाइप विच शुडंट कोलैप्स. ये ऐसा नहीं कि कोलैप्स हो गया तो किसी प्लम्बर को आपने बुलाया कि वो पाइप ठीक कर दे, बिकॉज इफ इट कोलैप्सेस यू आर गॉन, यू आर डेड. ठीक है. सो दैट्स व्हाई this pipe should be soft also and it should be hard also. Why should it be soft? It should be soft so that it can stretch outwards and stretch inwards. Inwards outward इसलिए कि जब आप breathe in कर रहे हैं तो ये खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा रबर बैंड की तरह. जब आप breathe out कर रहे हैं तो ये वापस रबर बैंड की तरह अपनी जगह पे आ जाएगा. Are you getting my point? But for this it requires a soft structure, but at the same time there is a chance that it might collapse. हो सकता है कि ये ऐसे खुला और फिर जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आए तो ये बहुत ज्यादा फुस हो गया, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह. वी डोंट वांट दैट. So for that reason we have these rings of C-shaped cartilage, right? And the rings of cartilage will do what? It's going to give mechanical strength to the trachea. Why? So
so as to prevent its collapse, so that it remains open all the time. Now repeat what I said. What's the function of cartilage? With the function of cartilage is that it keeps the trachea soft, and it's also hard so that while we're breathing in, the trachea can stretch outwards, and then when we're inhaling, the trachea can stretch outwards, and then once we're exhaling, then it can just stretch back inwards, and it provides mechanical strength to the trachea. अच्छा ना, दिस स्ट्रेच आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स की बात आप कार्टिलेज में नहीं बोलो, दैट्स द जॉब ऑफ द मसल। वो तो मैंने आपको ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। बट इफ यू हैव बीन स्पेसिफिकली आस्क्ड अबाउट दिस कार्टिलेज, ये जो आपको रिंग्स नजर आ रही है ना बनी हुई, इसका फंक्शन ये है कि इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द ट्रेकिया एंड so as to keep it open all the time. Mechanical strength to the trachea prevents its collapse. Let's look at the mark scheme. देख लेते हैं mark scheme को। See, keeps airways open, allows free flow of air to the lungs, allows flexibility, can breathe even when, basically mechanical strength आप लिखोगी वो भी, see what's the examiner saying, alternate valid point AVP। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाली बात भी जब आप लिखोगे ना, द एग्जामिनर विल नेवर नेवर कैंसिल इट। सो पर्पस क्या है, आप उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं सो दैट इट शुड नॉट कोलैप्स, दैट इज वन पॉइंट। एंड व्हाट डू यू एक्चुअली वांट बाय द एंड ऑफ द डे, यू वांट दैट द एयर शुड कंटिन्यूअसली कीप फ्लोइंग इन। ठीक है, Yeah. the air should continuously keep flowing in, and how are you ensuring that to happen? The only way to ensure that to happen is to have cartilage in the gas exchange system. ठीक है, अच्छा, soon after starting physical activity, the concentration of the carbon dioxide in the blood increases. Name, ये तो बहुत ही आसान है, name the process inside the cells all the time ये process हो रहा है that makes carbon dioxide. Remember, I told you there is one chemical reaction that is taking place all the time. What's that? Respiration. Very good. This is cellular respiration. Do you think cellular respiration is a metabolic reaction? Is it a metabolic reaction? Yes or no? Miss, metabolic reactions are reactions which, Take place inside the cells. So it yeah, is. yeah, Okay? It's a metabolic reaction. In fact, it's the most important metabolic reaction in your body. It happens all the time. एक सेकंड के लिए भी जैसे सेल्युलर रेस्पिरेशन बंद हुई, you're dead. ठीक है, and cellular respiration means के, if you remember I had done cellular respiration with you, याद है equation का नाम? yeah. The what's the equation, tell me? C6H12O6 plus 6O2 will be 6CO2 plus 6H2O plus energy. So this is the question that they were asking you, that if a person is exercising, if I am exercising, the concentration of carbon dioxide will keep increasing in my tissues. So why is that happening? Because when I'm exercising, of course I am undergoing this process. जो बंदा नहीं एक्सरसाइज कर रहा उसमें भी ये होगा, लेकिन जो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें तो बहुत जल्दी जल्दी होगा ना, isn't it? Because I now need more oxygen. If I need more oxygen because I'm exercising, I need more glucose. So this means that more of this reaction will take place and the concentration of carbon dioxide will increase. यही बात आपकी क्वेश्चन में लिखी हुई है. Read the question once again. Name the process inside the state the effect on breathing of an increase in carbon dioxide concentration in blood. ये तो चलो दूसरा क्वेश्चन है. चलो फिर से मतलब शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन. Read from there. Part C. Soon after starting physical activities. Read it out loud. Physical activity, the concentration of carbon dioxide in the blood increases. Name the process inside cells that produces carbon dioxide. So what did we decide right now? What's the name of that process? Cellular respiration, which is a metabolic process. ठीक है. Second. State the effect on breathing of an increase in carbon dioxide in the blood. If your carbon dioxide concentration is increasing in the blood, what will happen to your breathing? Oxygen dead को चले जाते हो ना? नहीं, ऑक्सीजन डेड की भी कोई बात नहीं कर रहा आपको. आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो अफेक्ट, क्वेश्चन देखो आपसे वो क्या पूछा, व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द ब्रीदिंग.
आप जो सांस ले रहे हैं, सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, उस पे इफेक्ट क्या होगा? विल योर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज और शुड इट डिक्रीज? Decrease. It should decrease. Your carbon dioxide concentration is increasing, and carbon dioxide concentration का बढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. Your body should actually try to get rid away of this carbon dioxide because it's a toxic product. ठीक है, it's a waste product. So in order to remove it very quickly, should you breathe more or should you breathe less? Miss, we should breathe more. हाँ ना, ऐसे जैसे हम तेज तेज सांस ले रहे हैं ऐसे, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अगर हम जितना जल्दी सांस लेंगे, सांस लेने का मतलब क्या? टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो सिंपल सी बात है. इमेजिन करो यू आर एक्सरसाइजिंग, यू आर इन द जिम. हाँ, आप जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज किया तो देन आपके सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रहा है. व्हाई? बिकॉज सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट रेट सिंस यू आर एक्सरसाइजिंग. अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता द कार्बन डाइऑक्साइड concentration in your blood is increasing. Now what will your body do to eliminate this extra CO2? It will breathe faster. यही तो होता है. आप ट्रेडमिल पे भागना शुरू करते हो और आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है. Miss, Isn't the it? cellular respiration हमारी body में oxygen बनाती है. Isn't it like the breakdown of food substances with the release? सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नहीं बना रही. बताओ क्या बना रही है? दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. इज सेल्युलर रेस्पिरेशन मेकिंग ऑक्सीजन और इज No, इट मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड carbon dioxide and water. and energy? Cellular respiration is using oxygen and food, using oxygen and food, and it's making CO2 and water and energy. But why does इसमें it CO, हाँ, ये क्यों करता है? मतलब why is it only making a carbon dioxide? because it's a waste product. Because from cellular respiration हमें जो काम की चीज चाहिए वो ये है. We take this, we just grab this useful thing, and this is gotten rid of from your body. And this is also, ये आपका सांस में बाहर चला जाएगा, ये जो है वो यूरिन बन जाएगा, वाटर, and you get rid of both these waste products. Are you getting it?